bell to get the nimble updates for latest videos. Hello students, welcome to IBPS Guide YouTube channel. Today our session is based on sentence rearrangement and fill-ups. You know that sentence rearrangement is a very important portion of banking exams or SSC exams. Sentence rearrangement means we get minimum 5 or 4 या 6 sentences and which will be in shuffling manner, means which will be not in proper order. So we have to make them in proper order. मतलब हमें इसको proper order पे सजाना है. Whenever we get the sentences that will be in proper, not in proper order, just we have to put the sentence in proper order, and after making making arrangement, it will be a pure paragraph, meaningful paragraph. So at first, the sentence will be the first sentence, which will be the first sentence that will be always related with introduction. Introduction. Our second sentence that will be related to matter. Matter may be have two parts, that is merit and demerit. And third portion will be suggestion as well as conclusion. So our sentence must be related with these 4 types of things, that is introduction, matter, suggestion and conclusion. Let's move to question. Here is our question. Question 1 to 5. Rearrange the following sentence to form a meaningful paragraph in order to answer the question given below. So here we get 5 sentences, A, B, C, D and E, and they asked which is the first sentence, next second sentence, then third sentence, then fourth sentence, then fifth sentence. So at first we have to locate which will be the first sentence. मैंने पहले ही बताई थी आप लोगों को जो first sentence जो होगा that will be always related with introduction. Introduction means sentence का जो एक paragraph जो हम लिखते हैं, इस paragraph का एक topic पहले होना चाहिए, जो किस topic के ऊपर हम paragraph को लिख रहे हैं, किस topic, what is our today's topic. So if we don't have any topic, then definitely we cannot start our paragraph. तो चलो पहले एक बार पढ़ के देखते हैं जो ये paragraph है किसके ऊपर. Our first sentence here given is, that is, Etihad identified that over 95 single-use plastic products are used across its aircraft cabins. Once removed from the Earth Day flight, Etihad prevented over 50 kilograms of plastics from being landfilled. Etihad identified that over 95 single-use plastic products are used in across its aircraft cabin. तो Etihad identify किया जो over 95 single-use plastic products, जो 95 से भी ज़्यादा single-use plastic product जो है जो used हुआ across its aircraft cabin. And once removed from Earth Day flight, Etihad prevented 50 kilograms of plastic from being landfilled. Our second sentence, the milestone flight is part Etihad's pledge to reduce single-use plastic used by users by 80%, not just in flight, but across the entire organization by the end of 2022, the airline said in the statement. This is a statement, the airline said in a statement. So this sentence is based on statement. Our third sentence is, the UAE's flag carrier Etihad Airways has become the first airline in the Gulf region to operate a flight without any single-use plastics on board in a bid to raise awareness about pollution on Earth Day. Fourth sentence, guests on board enjoyed replacement products including sustainable amenity kits, award-winning eco-thread blanket made out of the recycled plastic bottles, tablet, toothpaste, edible coffee cups, children were treated eco-plush toys. And fifth sentence is, according to Abu Dhabi-based national airline of the UAE, the flight EY484 landed in Brisbane on April 22 Earth Day. So guys, one thing, if we think that A will be the first sentence, Etihad identified, देखो यहाँ पे बहुत बड़े से क्वेश्चन हो जाएगा, what is Etihad? अगर इसको हमने फर्स्ट सेंटेंस कर देते हैं जो Etihad identified that over 95 single use plastic, so there will be big question जो what is Etihad, जिसकी आंसर
हमें बाद में मिलेगा. सो दैट्स वाई इट विल बी नॉट अवर फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस हमारा होता है पैराजम्बल में, दैट विल बी ऑलवेज रिलेटेड विथ सब्जेक्ट थीम. अगर सब्जेक्ट थीम हमें पता ना चले व्हाट इज अ सब्जेक्ट थीम, देन वी कांट राइट एनी पैराग्राफ. सो हियर इट इज नॉट द सब्जेक्ट थीम. तो पहले हमें सब्जेक्ट थीम को लोकेट करना होगा. सो ए कैन नॉट बी अवर फर्स्ट सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस देखो, द माइलस्टोन फ्लाइट इज पार्ट ऑफ Ethiar's pledge. The milestone flight. Which is the milestone flight? इसमें भी कोई specific कुछ name नहीं है, specific कुछ noun भी नहीं है. तो that's why the milestone flight, it cannot be the first sentence. But if you see the UAE flag carrier Etihad Airways, इन sentence में देखो Etihad क्या है हमें पता चल गया. इथियड क्या है? इथियड एयरवेज है. और यूएई फ्लैग कैरियर इथियड एयरवेज हैज बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन द गल्फ रीजन टू ऑपरेट अ फ्लाइट विदाउट एनी सिंगल यूज प्लास्टिक्स ऑन बोर्ड इन अ बिड टू रेज अवेयरनेस अबाउट पॉल्यूशन ऑन अर्थ डे. सो देखो सी विल बी द फर्स्ट सेंटेंस डेफिनेटली, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट थीम ऑफ द पैसेज. ये जो टोटल पैसेज का जो सब्जेक्ट थीम ये डिस्क्राइब कर रहा है अबाउट द अचीवमेंट. और इसमें क्या बोला गया है? जो अचीवमेंट किया, क्या अचीवमेंट किया? इथियड एयरवेज एयरलाइंस अचीवमेंट किया, एंड विच बिकम फर्स्ट एयरलाइन not to use plastic on broad and promote awareness among people about pollution. So UAS का flag carrier Etihad Airways जो है, that is our subject theme. So C will be the first sentence. Definitely C will be the first sentence. So हमें इसमें पूछा गया which will be the first sentence. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? B, because C will be the first sentence. नेक्स्ट जो सेंटेंस है देखो, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा हो सकता है? जो इडियट, देन हमारे पास है गेस्ट ऑन ब्रॉड बोर्ड एंजॉयड रिप्लेसमेंट प्रोडक्शन. एंड ई पे है अकॉर्डिंग टू द अबू धाबी बेस्ड नेशनल एयरलाइन ऑफ द ईएई, द फ्लाइट EY484 लैंडेड इन ब्रिस्बेन ऑन April 22 अर्थ डे. सो सेकेंड, अगर हमने देखे सेकेंड सेंटेंस, तो सेकेंड सेंटेंस देखो विल ई होगा सेकेंड सेंटेंस, बिकॉज इट विल बी विच डिस्क्राइब विच फ्लाइट इज यूज्ड फॉर दिस. देखो इथियड एयरवेज में कौन सी फ्लाइट इसमें यूज हुआ था? फ्लाइट नंबर क्या था? EY484. एंड फ्लाइट नंबर ये है. एंड व्हेन एंड वेयर इज लैंडेड, ये कहाँ पे लैंडेड होगा? ब्रिस्बेन में लैंडेड होगा. कब होगा ना? April 22 में लैंड हुआ था. दैट्स मीन ये अगर हमारा टॉपिक है तो दिस इज द फर्स्ट क्वालिफायर. एयरवेज का क्वालिफायर जो कौन सी प्लेन है? दैट इज ई. सो दैट्स मीन सेकेंड सेंटेंस हमारा होगा क्या? ई. So it will be आंसर होगा क्या? E. That's mean this is below C. देन थर्ड सेंटेंस हमें लोकेट करना है क्या? अगर हमने ये बोल दिया, जो देखो अकॉर्डिंग टू द अबू धाबी बेस्ड नेशनल एयरलाइंस ऑन यूएई, द फ्लाइट EY484 लैंडेड इन ब्रिस्बेन ऑन April 22 अर्थ डे. तो इसके बाद कौन सी ऑप्शन होना चाहिए? द माइलस्टोन फ्लाइट, बी. क्यों? क्योंकि इट्स डिस्क्राइब द स्टेटमेंट given by airlines about the pledge. It is a pledge taken and also about the target fixed by when should be achieved. इसमें ये क्या किया था? एक प्लेज किया था. क्या प्लेज था इसका? The reduce single use plastic used by 80% not just in flight but across entire organization by the end of 2022, airlines said in the statement. So ये जो थर्ड सेंटेंस इसलिए होगा क्योंकि डिस्क्राइब the statement given by airlines about the pledge taken and also about the target fixed. Pledge तो है pledge, और second क्या है? देखो there is a target fixed and by when it should be achieved. कब ये achieved होगा? ये सारे achieved होगा कब? 2022 में. 80% target है और this is the pledge. So that's why B will be the third sentence. And then तो ये statement हो गया. अब ये आइडेंटिफाई क्या किया? इथियड आइडेंटिफाइड. फोर्थ सेंटेंस कौन सी होगा? फोर्थ सेंटेंस होगा इसका ए. क्योंकि होगा देखो अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजर्स ऑफ अमाउंट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स डेली इन फ्लाइट बाय इथियड एंड हाउ इट प्रिवेंट. इसमें क्या बोला गया है? हाउ इट प्रिवेंट दिस बीइंग लैंडफिल बाय टेकिंग डिसीजन नॉट टू यूज प्लास्टिक. तो ये क्या किया? ये प्लेज किया. प्लेज करने के बाद ये ठीक किया जो इसको यूजेस किस तरीके से करना चाहिए. 50 किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक ऑफ बीइंग लैंडफिल. सो दैट्स वाई ए जो है ये हमारा हो गया फोर्थ सेंटेंस. एंड डेफिनेटली जो बचेगा गेस्ट ऑन
Guests on board enjoy replacement products including sustainable amenity kits, award-winning eco-thread blanket made out of recycling plastic bottles, tablet, toothpaste, edible coffee cups, while children were treated of eco plus toys. So मतलब ये जो landfill होगा इसमें से ये सारी चीज बन सकता है जो cups हो. So that's why D will be our fifth sentence. So that means हमारा आंसर जो होगा पहला सेंटेंस है डेफिनेटली सी, सेकंड जो सेंटेंस है डेफिनेटली विच विल बी ई. तो विच विल बी द थर्ड सेंटेंस. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट हमें पूछा गया है विच विल बी द थर्ड सेंटेंस. तो थर्ड सेंटेंस हमने क्या किया, बी विल बी द थर्ड सेंटेंस. मतलब ये सी जो है ये हमारा हुआ फर्स्ट. अच्छा, ई जो है दैट इज आवर सेकंड सेंटेंस और बी जो है दैट इज आवर थर्ड सेंटेंस. तो बी मीन्स दैट विल बी आंसर होगा ए. एंड फोर्थ सेंटेंस which will be the fourth sentence. फोर्थ हमने कौन सा किया, फोर्थ हमने किया ए को. सो दैट्स मीन आंसर विल बी ए. सो दैट इज बी. एंड नेक्स्ट जो स्लाइड हमारे पास है जो हमें पूछा गया दैट इज द फिफ्थ सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस. तो लास्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, डी. दैट इज द लास्ट सेंटेंस. मतलब दिस विल बी द फिफ्थ सेंटेंस, डी. सो आंसर विल बी. दैट्स मीन इसका फाइनल ऑर्डर कैसे बनेगा, सी, देन है ई, देन होगा बी, आफ्टर दैट ए, आफ्टर दैट डी. सी हमें सब्जेक्ट थीम बता रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस हमें बता रहा है कि जो डिस्क्राइब फ्लाइट नंबर कौन सा है, विच फ्लाइट. थर्ड सेंटेंस हमें बता रहा है कि जो एयरलाइन का जो प्लेजेस है वो क्या है. फोर्थ सेंटेंस हमें बता रहा है कि क्या क्या आइडेंटिफाई किया. और फिफ्थ सेंटेंस हमें बता रहा है कि जो प्लास्टिक एंजॉयमेंट किस तरीके से हुआ है. सो देयरफॉर सी, E, B, A, D will be the correct arrangement. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन we get 6 to 10. In the passage given below there are blanks filled with numbers. This is a very common question of banking exams. Close gap जिसको कहते हैं. We get a paragraph and each of two lines we get a gap, that is 6, 7, 8, 9 numbering, and 6 के लिए 4 option, एक option none of this, 7th के लिए भी 4 option, 8th के लिए भी 4 option, and we have to locate which will be the correct option. चलो एक बार पहले पढ़ते हैं. जब भी पैराग्राफ क्लोज टेस्ट जब भी हमें करना है ना, पहले हम इसको एक बारी डेफिनेटली वंस यू जस्ट run through जो what's the meaning of this paragraph and what is the essence of this paragraph. The report by the Expert Committee on Economic Capital Framework ECF that is expected to spell out details dash how the Reserve Bank of India should handle its reserves and whether it can transfer its surplus to the government will now be submitted during May-June, missing its April deadline. The report is also expected to detail the amount of central bank should dash to the government. The report will finalize in May-June. Former RBI governor and head of the panel Vimal Jalan said after the meeting of ECF in New Delhi on Tuesday. The meeting was also attended by Finance Secretary Subhash Chandra Garg. The committee on ECF was set by the central bank in December 2018, was expected to dash its report within 90 days from the date of its first meeting. So the main theme of this passage is the report by the Expert Committee on Economic Capital Framework. That is Economic Capital Framework, which is ECF, Economic Capital Framework, that is expected to spell out detail. First option we get regarding, connecting, occurring and facing. So guys, I hope it is clear. जो spell out detail regarding means होता है क्या, जो with respect to something. जब हमने किसी चीजों के बारे में कुछ बोलते हैं तो that's why that is the regarding. So therefore our answer will be A, regarding means with respect to something. Regarding how the Reserve Bank of India RBI should handle its reserve and whether it can transfer its surplus to the government will now be submitted during May-June, missing its April deadline. The report is also expected to detail amount of central bank should. First option we get yield, second option transfer, operate, consider. So which can be the correct option? देखो the report is also expected. Report में also expect किया गया to detail the amount the central bank should transfer to the government. कितना central bank को transfer करना चाहिए government के लिए. So that definitely the answer will be B, that is the transfer.
to the government. The report will be finalized in May-June. Former RBI governor and head of the panel, Bimal Jalan, said after the meeting of ECF in New Delhi on Tuesday. The meeting was also attended by Finance Secretary Subhash Chandra Garg. The committee of ECF was set by the central bank in December 2018 and was expected to, first option we get operate, then function, then submit, then procure. So डेफिनेट करके ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? द कमिटी ऑन ECF was set by central bank in December 2018 was expected to सबमिट ही करना है रिपोर्ट को, तो सबमिट इट्स रिपोर्ट. सो देयरफॉर आवर आंसर सी विल बी सबमिट its report within 90 days from the date of the first meeting. Besides Jalan and Garg, former RBI Deputy Governor Rakesh Mohan, directors of RBI Central Board Bharat Doshi and Sudhir Makand, the RBI Deputy Governor N.S. Vishwanathan are also the part of the panel. Next question, next option चलते हैं. Next हमें get the panel was constituted at the time when government and the central bank were loggerheads. Loggerheads मतलब होता है क्या? Enmity, दुश्मनी. Loggerheads on the issue of RBI's surplus transfer to the government. The expert committee would, first option we get, consider, inspect, determine and review. So can be what can be the correct option? The expert committee would review the status, क्योंकि status को review किया जाता है. Review the status. Review मतलब होता है क्या? Review होता है क्या? To think or talk about something. किसी चीज़ों के बारे में सोचना, किसी चीज़ों के बारे में बोलना, समथिंग इन ऑर्डर टू मेक द चेंजेस. कुछ चीज़ को चेंज करने से पहले अगर इसके बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ थिंक किया जाए, दैट इज कॉल्ड रिव्यू. रिव्यू स्टेटस, नीड एंड जस्टिफिकेशन ऑफ वेरियस प्रोविजंस, रिजर्व्स एंड बफर्स प्रेजेंटली प्रोवाइडेड फॉर बाय द आरबीआई एंड रिव्यू. And most important, second time it is already repeated, global best practices followed by central bank in making assessment and provisions for risks which central bank balance sheets are subject to. According to the terms of reference of the committee, the panel should recommend an adequate level of risk and provisioning that RBI needs to maintain, and also suggest that would be treatment of the surplus reserves. 10th ऑप्शन पे हमारे पास जो वर्ड है दैट इज क्रिएटेड, ऑब्टेन्ड, एज्यूम्ड एंड एक्वायर्ड. तो कौन सी होगा? देखो, आरबीआई नीड्स, आरबीआई की जरूरत है टू मेंटेन एंड ऑल्सो सजेस्ट दैट व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस रिजर्व्स डैश आउट बाय रियलाइज्ड गेन. तो क्रिएटेड आउट ऑफ रियलाइज्ड गेन्स. सो आंसर विल बी क्रिएटेड. तो these are 5 क्वेश्चन. क्रिएटेड इसमें ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस. क्रिएटेड मीन्स इसमें कुछ बनाना नहीं, क्रिएटेड करना इसमें मीनिंग है जो ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस. ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस, जब कुछ चीज को एग्जिस्टेंस के लिए लेके आ जाता है. So these are 5 questions which are based on close gap. Close gap basically it's not so tough. But we need a understanding ability, because देखो 9 और 10 के बीच में इतनी सारी lines है. If we don't understand the meaning of these sentences, so we do not have any options to put these words. So at first you have to understand the theme of this passage and then you put the words. So be very careful, my dear students, because this is a very important close gap completion is a very important and very most important मैं तो बोल सकती हूँ. तो इसको हमने कभी भी इग्नोर नहीं करना. और नॉट इवन बैंकिंग एग्जाम्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्जाम्स ऑल्सो. इन एवरी एग्जाम्स दिस इज क्लोज गैप कंप्लीशन, ये आते ही है, चाहे क्लैरिकल की पेपर हो या प्रोबेशनरी एग्जाम ऑफिसर्स हो. सो जस्ट रन थ्रू द पैसेज. पहले एक बार पैसेज को पढ़ लो विथ गैप्स, देन ट्राई टू पुट द वर्ड्स. So these are 10 questions for today's session. The first question, the first 5 sentence rearrangement, and another 5 will that is fill in the blanks. I hope you can understand it and try to practice it and try to understand it. And most important, it is a practice. Okay, practice makes a man perfect. और every time कुछ ना कुछ करते रहो. आई मीन टू से कुछ ना कुछ पढ़ते रहो. एडिटोरियल को पढ़ते रहो, या कोई स्टोरी बुक पढ़ते रहो, या कोई लिटरेचर बुक पढ़ते रहो, क्योंकि इंग्लिश के जितनी टच पे रहोगे ना, इंग्लिश उतना ही तुम्हारे लिए इजी होगा. एंड एक बार अगर आउट ऑफ टच हो गए तो इंग्लिश
सेकेंड टाइम इसको ग्रिपिंग में लाना बड़ी मुश्किल होती है. सो दैट्स वाई स्टे ट्यून्ड विथ अस. एवरी डे you will get a new type of question paper and new type of words and new type of editorial words, new pattern question paper. So stay tuned with IBS guide. And tomorrow I will come and bring some different type of questions for you, and which will be very much helpful for SBI PO examination as well as IBPS examination. Till then, goodbye. Have a nice day.